Welcome to Too Easy to Learn. Dear students, in this lesson we will discuss sine rule. What is sine rule? And we will discuss how to apply sine rule and where to apply sine rule. And at the end, we will discuss few exam questions. So keep watching till the end of this video. Before starting this lesson, kindly subscribe channel and press bell button for updates. And if you want to get full course, visit our website tooeasytolearn.com. Let's start our lesson. Sine rule. So dear students, what is sine rule? और ये कब अप्लाई किया जाता है? जब हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं और ना ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए. राइट नो देयर इज acute angle triangle और एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो हम इस ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई की जा सकती हैं और ना ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं साइड फाइंड करने के लिए और एंगल फाइंड करने के लिए. तो फिर हम लोग इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे? There are two rules. One is called cos rule and second one is called sine rule. Right now we are going to discuss sine rule. Let's discuss what is sine rule. Sine rule is the ratio of a side and sine of opposite angle. जैसे कि यहाँ पे साइड A है और इसका ऑपोजिट एंगल कैपिटल A, तो ये इसकी रेशियो है साइड A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल A. तो हमने इसलिए इसको साइन रूल बोलते हैं क्योंकि इसमें साइन रेशियो अप्लाई की जा रही है. एंड इट इज इक्वल टू साइड B डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल साइन B. साइन B का जो ऑपोजिट एंगल है साइड B के सामने, तो साइन B. इसी तरीके से साइड C डिवाइडेड बाय साइन C. तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्री, ये आपने फॉर्मूला साइन रूल का याद रखना है. A over sin A, B over sin B and C over sin C. अगर फार्मूला में अगर साइन नहीं लिखते तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दैट वुड बी अ रॉन्ग फार्मूला. तो याद रखिएगा साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल. लेट्स डिस्कस व्हेन टू अप्लाई साइन रूल्स. हमें कैसे पता चलेगा कि साइन रूल हमने अप्लाई करना है कि कॉज रूल अप्लाई करना है? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सही टेक्निक है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने साइन रूल अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू कैलकुलेट दिस साइड B and we have its opposite angle B which is 30 degree, and also we have the angle A 65 degree and its opposite side A which is 15 units. अगर ट्रायंगल के में एक पेयर एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड का गिवन हो तो सिंपली अप्लाई साइन रूल. व्हेन वन पेयर ऑफ साइड एंड इट्स ऑपोजिट एंगल इज गिवन, अप्लाई साइन रूल. तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्रायंगल में एक साइड और उसका ऑपोजिट एंगल गिवन हो तो आप साइन रूल को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और साइन रूल का आपको फार्मूला आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस ट्रायंगल XYZ. Now angle 30 is given which is angle Y. These two sides, side X and side Z are given. अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो आपको साइड और उसका ऑपोजिट एंगल गिवन नहीं होगा. जैसे 30 डिग्री है तो Y हमने कैलकुलेट करना है. यहाँ पे साइड X 15 गिवन है लेकिन इसका ऑपोजिट एंगल गिवन नहीं है. साइड Z जो कि 25 यूनिट है लेकिन इसका ऑपोजिट एंगल Z गिवन नहीं है. तो इस ट्रायंगल में वन पेयर ऑफ साइड एंड ऑपोजिट एंगल इज नॉट गिवन. दैट्स व्हाई we cannot apply sine rule for triangle XYZ. Let's discuss one question. How to find a side by using sine rule. Two angles and one side is given. For example, we want to calculate side B
and its opposite angle is given 30 degree, angle A which is 65 degree and its opposite side A which is 15 units. तो यहाँ पे एक पेयर गिवन है, साइड और ऑपोजिट एंगल गिवन है, we'll simply apply sine rule. A over sine A, B over sine B and C over sine C. Plug in the values in this formula. तो हमने साइड ए की वैल्यू 15 है और एंगल ए 65 डिग्री है, तो 15 ओवर साइन 65 भी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसका अपोजिट एंगल 30 डिग्री गिवन है, सो बी ओवर साइन 30 डिग्री. डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो b मल्टीप्लाइड बाय साइन 65 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30. Now rearrange. So b is equal to 15 times sine 30 divided by sine 65. Sine 65 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा. Now use your calculator. Use ratio button or division button on your calculator. Plug in values. Write down the same thing on your calculator, and you will get the value of b 8.2753. So इसको 3 significant figure तक round off करें. Third significant figure is 7. So your final answer is 8.28. Let's solve one more question to find angle. So two sides and one angle is given. For example, we want to calculate angle B और उसकी opposite side B is 10 units given है. इसके अलावा अगर हमारे पास angle A is given which is 65 degree and its opposite side is also given which is 15 units. तो इस triangle में भी आप देखें one pair of side and opposite angle is given. It means that we have to apply sine rule. So let's write the formula of sine rule. A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. Now plug in values in this formula. So A is 15 and its opposite angle is 65. So 15 divided by sine 65, 10, B is 10 and its opposite angle is to be found, which is angle B. So we will write 10 divided by sine angle B. तो हमने फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन कर दी. डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So we will write 10 multiplied by sine 65 is equal to 15 multiplied by sin B. Now rearrange it. 15 sin B से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा. तो we can write sin B is equal to 10 times sin 65 divided by 15. Now use your calculator. Write this expression on your calculator and press equal button. You will get sin B is equal to 0.6042. Now shift sine to the right side, it will become sine inverse. जब भी आपने एंगल फाइंड करना है तो आप हमेशा ट्रिग रेशो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो राइट साइड पे जब उसको शिफ्ट करेंगे तो वो इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. सो बी एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6042. अब साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, साइन का बटन प्रेस करेंगे, यू विल गेट द साइन इनवर्स. ब्रैकेट में आप 0.6042 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, प्रेस इक्वल बटन एंड यू विल गेट बी एंगल इज इक्वल टू 37.171 डिग्री. आप एंगल को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, सो 1 डेसिमल प्लेस इज 1. So angle B is 37.2 degree. This is our final answer. Let's solve one more question to find an angle, but this time the situation is different. यहाँ पे हमने एंगल C कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि साइड B है, लेकिन इसका ऑपोजिट एंगल तो हमारे पास नहीं है. So how can we apply this formula? लेकिन ये एक पेयर गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 65. तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस
B side, we will calculate angle B. तो जब हमारे पास दो एंगल आ जाएंगे, एंगल ए इज ऑलरेडी गिवन, वी विल कैलकुलेट एंगल बी, हमें सेकेंड एंगल भी मिल जाएगा, एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो 180 डिग्री से हम एंगल ए को और एंगल बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट एंगल सी. तो बाज़ औक़ात आपको इनडायरेक्ट वे से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है. In this question, the situation is 65-degree angle and opposite side is given, means that one pair of side and its opposite angle is given. It means that it indicates that you should apply sine rule. So formula is written, plug in values, 15 over sine 65, 10 over sine b, cross multiply कीजिए, इनको solve कीजिए. Your answer is 37.171 degree. This is angle B. Now, we know that sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Plug in value of angle A 65, angle B 37.171, and we have to calculate angle C. Shift these two angles to the right side. So angle C is equal to 180 minus 65 minus 37.171. कैलकुलेटर पे इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, एंड योर आंसर इज एंगल सी इज इक्वल टू 77.829. Now angle is rounded off by one decimal place. 8 is the one decimal place, and your final answer is 77.8 degree. Dear students, by solving these three questions, I hope you have got the full understanding of sine rule, how to apply sine rule and when to apply sine rule, कि sine rule apply करने की indications क्या हैं. At the end, learn by heart. आपने formula याद करना है, आपने इसका tip याद करनी है. When one pair of side and its opposite angle is given, apply sine rule to find the required value. So at the end, there is a home assignment. You get a task. You have to find side QR. तो आप इसे सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और अगर आपने किसी और कॉन्सेप्ट पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कीजिए ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. So that's all for today. See you in next lesson. Thank you.